show the variation of force of friction with the applied force. Now, जिस प्रकार से as we see that applied force जिस प्रकार से बढ़ेगा तो static friction भी उस प्रकार से बढ़ता चला जाता है. Static friction जैसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड सरफेस पे रखा है और ये ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है, तो फोर्स जिस प्रकार से अप्लाई हो रहा है उस प्रकार से अपोजिशन भी लग रहा है. तो अप्लाइड फोर्स, इफ दिस इज अप्लाइड फोर्स मीन्स एफ एंड दिस इज फ्रिक्शन स्मॉल एफ, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स विल बिकम इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. तो जब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे अपोजिशन भी बढ़ती चली जाएगी, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, तो ये इक्वल रहेंगे. तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा, मीन्स O2A पर्टिकुलर वैल्यू, O2A यहां तक कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक हम कहेंगे दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिशन प्रोवाइड करेगा. दिस इज द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन for opposition, static friction. In order to keep that body at rest, इस बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए जो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसको जब अपोजिशन मिल रही है तो ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पर ही है, तो ये रेस्ट पे रखने के लिए, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखने के लिए जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है उसकी यहां तक ए तक हमने एज्यूम किया कि मैक्सिमम लिमिट है. सो नाउ this show that static friction is self-adjusting friction also. I can also write this is a type of self-adjust हो रहा है बॉडी इस दौरान, self-adjusting force. जब एक्सटर्नल फोर्स के दौरान भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन उसको एक्सटर्नल फोर्स को जो है अपोज कर रहा है, तो इट मीन्स दिस इज self-adjusting force. Now if you talk about kinetic friction, so kinetic friction is always less than limiting friction. So kinetic friction, this is the value of kinetic friction right here. This is the particular, I am writing with different color. Now this is the value of kinetic friction right here. This is the range of kinetic friction right here. This is the range of kinetic friction. Why is this so? बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. हियर इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. फिर स्लाइट वैल्यू डिक्रीज होगी, देन उसके बाद वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन राइट हियर up to the point, I may write point up to the point B. So here, from here we can conclude that, from here I'm writing here, from here we can conclude that kinetic friction is always less than static friction maximum value. और kinetic friction के दौरान क्या होगा? kinetic friction के दौरान जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, in this direction I can take, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है in this particular direction, this is force, और फ्रिक्शन अपोजिशन में है लेकिन स्टिल ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन विद एफ नेट फोर्स. सो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ के. सो हेयर इन द केस ऑफ मोशन, एक्चुअली in the case of, this is the case of rest, I am taking the case of rest, and this is the case of motion I am taking. जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने लगा तो दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, it is defined as the ratio of friction to the normal reaction. So here we can say that in case of static friction I can write static friction F static maximum value is proportional to the normal reaction. Just like in this particular case, if this is the weight of the box and weight को oppose करने के लिए normal reaction ऊपर की तरफ act हो रहा है in this direction, and this is the applied force right here and this is the opposition force, means force of friction. So here जिस प्रकार से force of friction बढ़ेगा उस प्रकार से normal reaction बढ़ रहा है, या फिर I can say that
frictional force is directly proportional to the normal reaction, and I can write in this manner: friction which is having maximum value equals to mu s into r. So this mu s is known as coefficient of friction. So here I am writing for static friction. So mu s I can write in this manner: mu s equals to Fs max over r. So this is the basic definition of coefficient of friction, or it is known as proportionality constant. So proportionality constant mu s is called coefficient of friction, and it is defined as the ratio of the friction to the normal reaction. And in case of kinetic friction, mu k equals to Fk over r. In this manner we can define. So actually coefficient of friction is the ratio of friction to the normal reaction. One more point which we have to keep in mind right here: static friction is always greater than kinetic friction, which is further greater than rolling friction. So in this manner we can conclude that coefficient of rolling friction is less than the coefficient of kinetic friction, which is further proceed to coefficient of static friction. So this is the main concept which we have to keep in mind right here. Mu r is less than mu k than less than mu s.